Yes, ma'am. So today we'll be just having the introduction of limits. Okay, explain you what exactly limits and derivatives. Why exactly you need to learn this chapter? Suppose we are having a function. Suppose we are having a function f of x is equals to x cube minus 1 by x minus 1. Okay, and suppose you want to check what is the output at x equals to 1. Please check it now. When we will be taking x equals to 1, then what will be the output? Yes, Ali and Alina, what will be the output when x is 1? What is the function? What is y when x is 1? Yes, yes, Ali, Alina, what are you getting? Just a second. Zero. When x is 1, our function is becoming 0 by 0, yes or no? Yes, ma'am. Okay, this is something which is not defined in mathematics. Okay, 0 by 0 means, can we say 0? But in denominator 0 is not acceptable. But here we are getting denominator also 0. Okay, so exactly we are not able to say what will be the output at x equals to 1. We are not able to say that. Okay, so here comes the concept of limit. That okay, if we cannot say what will be exactly the value at x equals to 1, what will be the output if we are not able to say that. Let's check nearer, like closer to 1. Closer to 1, what, how the function is behaving. Here suppose 1 is there. Okay, closer to 1, from the left, from the right, how exactly the function is behaving. So let me take few values over, just a second. X, f of x. Okay, if our, like, randomly we have taken x as a 0.5. Okay, 0.9, I said that okay, at x equals to 1, we don't know how the function will behave. What about the points closer to 1? Okay, that means somewhere 0 must be there. Okay, so what is the output at 0.5, or maybe at 0.9, or maybe at 0.99999, very closer, very closer, very closer. How we are going to get the output? Okay, let's check it. We need calculator for that. It's not something we need to learn over. Okay, yes, I will. Okay, this simplification we are not going to discuss over here. Calculator will be using. Let me open the calculator. We'll be fine. Just a second.
have calculator earlier and Alina? Anyone? Do you have calculator? Okay, let's Yes, use it ma'am. again. Okay. So that means even if I'm not showing it to you, you will be able to do the calculation. I'm showing you for one value, okay, you do for the other. Just a second, let me share the screen. Okay, you have seen that we wanted to find our function was x cube minus 1 by x minus 1. Can you see the screen? Yes, ma'am. And we have taken 0.5. Okay, so let me use the bracket. 0.5 cube minus 1 divided by 0.5 minus 1. You can see can you see the answer over here? Yes, ma'am. Okay, we have taken 0.9. So 0, let me use the bracket. 0.9 क्यूब. हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ये तो नहीं पता लग रहा है कि x इक्वल्स टू 1 पे y का क्या वैल्यू है, लेकिन जब x के क्लोजर y कैसे बिहेव कर रहा है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो 0.9 क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज divided by 0.9 minus 1. Okay, 2.71. अच्छा ठीक है. Let's check for the other values also. We have taken 0.99. Okay, so 0.9 minus 1 by 0.99 minus 1. Okay, then 0.999 we have also taken. One kept like very closer, very closer, very closer. So 999 we had also taken. 0.123 minus 1 bracket close divided by 0.1. Okay. Next, let's take one more time 0.9999. Okay, so 0.1234, that's cube minus 1. Okay, bracket close divided by 0.1234 minus 1. तो ये सारे वैल्यूज को देखते हुए क्या हम ये कह पा रहे हैं? ध्यान से देखो अलियन अलीना, जो आंसर्स हमें मिले सबसे पहले 1.75 मिला, next one is 2.71, next one is 2.97 whatever, next one is 2.99 after that, like whatever is there, next one is 2.999. So can we say that हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से,
तो y जो हमारा रिजल्ट है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, आया ना? हाँ मैम। कुछ ऐसा दिख रहा है अली? कैन यू सी द आंसर्स? Yes, ma'am. इसे कहते हैं, हम x पे तो वैल्यू नहीं निकाल पाए, लेकिन we can find what is happening when x is approaching to 1, and that's where the concept of limit came. लिमिट का मतलब है हम उस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर नहीं भी बात कर पा रहे, अगर वहां अनडिफाइंड भी है तो भी कोई बात नहीं, हम उसके क्लोजर देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो y वैल्यू वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, इसे कहते हैं लिमिट. ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट ऑन द स्क्रीन that when x is limit will be writing it like that, limit f of x अगर हमें फाइंड करना है, f of x का लिमिट फाइंड करना है, कब? जब x 1 को अप्रोच कर रहा है. ये जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो f of x किसको अप्रोच करेगा? 3. कैसे पता लगा हमें? ऑब्जर्वेशन से. गेटिंग इट? Sir. We can also Yes. write it this Yes, way, ma'am. that limit x is approaching to 1, and f of x was the function also you can write here, and its value is 3. इसका मतलब हम हमारे माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तब जाके y इस नंबर को अप्रोच कर रहा है. हो सकता है x 1 पे डिफाइन हो या ना हो. ओके, दैट्स कॉल्ड लिमिट. ओके, so we'll be finding the limit like that. Now let me take one more example. Just a second. और एक्चुअली ये लिमिट हमें कैसे मिलता है? हमारे हमारे बुक में सबसे पहले एक एल्जेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट होगा. उसे कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर हमें ऐसे फंक्शंस का लिमिट फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, व्हेनेवर वी आर सपोज्ड टू फाइंड द लिमिट. ओके, व्हेनेवर वी आर, तो क्या हम हर बार कैलकुलेटर ओपन करेंगे, हर बार कैलकुलेटर में देखेंगे कि कैसे y कैसा बिहेव कर रहा है? नो, we will be doing the simplification. This x cube minus 1 a cube minus b cube का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? Can we use the formula of a cube minus b cube? Do you know the Yes, formula ma'am. for a cube minus b cube is? What is the formula? Ali and Alina, a cube minus b cube का फॉर्मूला क्या होता है? A minus B whole square. A minus sorry, A square minus 2AB plus B square. Yeah. Okay, a square plus ab plus b square, 2ab अगेन. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्चुअली हमें यहाँ से मिला था, इस वाले फॉर्मूले से. a minus b का होल क्यूब is equals to, in one bracket, like you can use to write this formula as a cube minus 3ab in bracket a plus b, okay, plus b cube. एक्चुअली ये फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूले से डिराइव किया है, इसीलिए कभी कभी बुक में ना ये फॉर्मूला दिया ही नहीं रहता है. ओके, लेकिन एक्सपेक्ट करता है कि हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है. a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये है. अगर यहाँ से हमें a क्यूब, दिस वाज माइनस ऑफ कोर्स, a क्यूब माइनस b क्यूब फाइंड करना होता है तो हम इस 3ab वाले टर्म को इस दूसरे साइड में will be shifting it, so it will be plus 3ab in bracket a plus b. Why a plus b I am writing that? Not saying that it must be a minus b. It will be a minus b, right? Again, Anita, is it clear so far? Is it clear? Yes, ma'am. And from here, if you will take a minus b common, you will be left with a minus b whole square plus 3ab. Yes or no? And you will be left with
a minus b in one bracket and in another bracket, ध्यान से देखो हमें a square मिलेगा प्लस बी स्क्वायर भी ऑफ कोर्स मिलेगा और माइनस 2ab मिलेगा जो कि 3ab के साथ अब्सॉर्ब होके ओनली प्लस ab क्रिएट करेगा. आया ना? Yes, a ma'am. माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम हमेशा डायरेक्टली यूज करेंगे. यही फॉर्मूला है. Okay, a minus b in one bracket and in another bracket everything is positive, a square b square ab everything. So अगर हम ये फॉर्मूला अपने फंक्शन में यूज कर लें, that is x minus x cube minus 1 cube का मतलब है x minus 1 in one bracket and in another bracket x square plus x into 1 that is only x plus 1. Okay, by x minus 1. तो ये हम यहाँ से देख पा रहे हैं x minus 1 कैंसिल हो जा रहा है और अब अगर हम 1 पुट कर दे, अब हमारे पास जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसमें 1 पुट कर दे, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ हमारा आंसर 3 आ रहा है. आया ना? Yes, ma'am. जो हमने ऑब्जर्व करके बहुत सारे डेसिमल नंबर्स लेके निकाले थे वो ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एट वन ये x इक्वल्स टू स्टिल ये फाइंड करने का मेथड है, बट हमारा लॉजिक वही है कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो y किस नंबर को अप्रोच करना है, तो y 3 को अप्रोच कर रहा है. ये रिजल्ट हमें इतना इजीली मिल सकता है और ऐसे ही इजीली हम फाइंड करेंगे बहुत सारे फंक्शंस का लिमिट. अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा तो क्विक क्विक विल बी डूइंग द सिंप्लीफिकेशन एंड देन वी विल पुट द वैल्यू. डायरेक्टली वी कैन सी if x is approaching to that number then y is approaching to which number. Am I making sense? Yes, ma'am. Okay, तो हर बार हमें नंबर्स लेके और पुट करके इतना कैलकुलेटर यूज कर, ऑफ कोर्स इज नॉट. So let's take one more example. As we said that today you need to understand what exactly is limit. Okay, so we'll be taking more examples. Just a second. If we are having the function if we are having the function f of x is equals to sin x, okay, and if we have to check that when x equals to pi by 2, what is the value for sine? Yes, what is the value? Yes, Aliana Lila. When x equals to pi by 2, sine pi by 2 will be 1. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. However, here the function is defined at x equals to pi by 2. The output will be 1. When x is approaching to pi by 2, then also we will be able to see the same pattern. Okay. Then you will be taking x is approaching to pi by 2. Better than pi by 2. Shall I take another number? Let me think. Because again I have to open the calculator and I have to show the whole calculation. Because pi by 2, pi will be
3.14 or 22.22 by 7, because we are talking about numbers 1, 2, 3, 4. Okay, so of course pi is nothing but 3.14, that irrational number. Let me take another example. Okay, so let's solve few questions first. Suppose we are having the function f of x is equals to x cube minus x square plus 1. Okay, and we have to find the limit of the given function. Limit when x is approaching, okay, limit we have to find at x equals to 1. We also write the same thing directly as we have to find the limit f of x. If f of x is given x cube minus x square plus 1, then we have to find limit of the given function f of x. You can write it like this. When x is approaching 1, I said to you that directly also you will be able to find it. When you will be substituting 1, you will end up getting the y value, that where exactly y is approaching. Okay, so please find it. And if you are not getting, 0 by 0 or 1 by 0, that type of scenario is getting generated, that means take a pause, try doing the simplification. Okay, there is a discontinuity that we can remove by doing the simplification. Okay, so take a pause, do the simplification. Maybe after that you will put the value of x and you will be able to obtain the y value. Okay, so please find the limit of the given function first. Do it now, Ali and Alina. We have to find the limit of the given function x is x cube minus x square plus 1. We just need to substitute 1 at the place of x and we'll be getting the answer. Yes, it's that simple. x के place पे just हमें 1 put करना है और हमें मिल जाएगा कि y किस नंबर को अप्रोच कर रहा है. Ma'am, 1. 1 cube minus 1 plus 1. Yeah, it will be 1. Okay, like that I am giving few more. Suppose we are having limit x tends to 3 and the function is given like that, x plus 1. x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है तो y किस नंबर को अप्रोच करेगा. यस, x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है तो y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा. द सेकंड वन, प्लीज टेल मी Ali and Alina. 12. Yes, it will be 12. And the next one, when x is approaching minus 1, then y will approach which number? 1. Just a second, let me share it. Then y will approach 1. Is it so? Alina, are you getting the same? Yes or no? Yes, ma'am. Now tell me this one. When x is approaching to 2, then
the function that is x cubed minus 4x square plus 4x by x square minus 2. This function will approach to which number value? Ma'am, it's 0. 0 by 0? Is it 0 by 0? No, ma'am. Then it is approaching 0. The final answer is 0. It is 0 by 0. It is 0 Yes, by ma'am, 0. 0 by And 0. whenever it is 0 by 0, which is called undefined, okay, it is called undefined. And whenever it is creating 0 by 0, that means we will just get back to the function and we will check that can we do any simplification over, can we remove the problematic points, like the problematic factors from here, the way we did for x cube minus 1 by x minus 1. X minus 1 we have removed, we have just cancelled with each other, and then we ended up getting such an expression where we substituted one and we ended up getting the y value. Here also we'll be doing the same thing. जब भी हमें 0 by 0 मिलेगा, ऐसा अनडिफाइंड टाइप ऑफ सिनेरियो मिलेगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है 2, इस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो x जो 2 के क्लोजर है उस पे डेफिनेटली x डिफाइन होगा. हम टेबल बना के नहीं चेक करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और उसके बाद 2 पुट करेंगे. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर हमने टेबल बना लिया तो ऑफ कोर्स हम देख पाएंगे, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है. ओके, तो वो वाला मेथड तो ठीक है समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और उसके बाद 2 पुट कर देंगे. ऑफ कोर्स हमें वही वैल्यू मिलेगा जो टेबल से मिला. ट्राई करो, देखो सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है या नहीं. We can do over here. We can take x common from the numerator and we'll be having x square minus 4x plus 4. इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. क्या ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है? चेक करो. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हम यूज कर सकते हैं. हाउएवर हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आया ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हमें यही x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ही देने वाला है. ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है? x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट, x माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट. इसका मतलब कि हाँ, सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे पॉसिबल है. चलो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. we'll be copy pasting this limit tends to 2. ऐसे इसको रीड करते हैं, लिमिट x tends to 2. okay, tends to 2 इसका मतलब होता है x is approaching to 2. okay, limit x tends to 2. we can do the like x minus 2 whole square over x plus 2 in one bracket, x minus 2 in another bracket, and we can cancel out x minus 2 with x minus 2. okay, now we will substitute. अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में. ओके, x के प्लेस पे हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे. तो हमारे पास न्यूमरेटर में ध्यान से देखो एक x है और एक x माइनस 2 है, और हमारे पास डेनोमिनेटर में x प्लस 2 है. अब जब हमने x के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट किया तो हमारे न्यूमरेटर में क्या आया? 0, और डेनोमिनेटर में क्या आया? 4. 0 बाई 4 का तो मतलब 0 होता है. क्या ये एक्सेप्टेबल है? हाँ, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन डेनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं है. एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस? 0 बाई 4 विल वर्क, जिसका मतलब आंसर इज 0. मैथ्स में आंसर 0 भी होते हैं, लेकिन डेनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है.
Am I making sense to both of you? Yes, ma'am. Ma'am. तो इस अगर हमारा x 2 को अप्रोच कर रहा है तो y किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? y 0 को अप्रोच कर रहा है. Okay, if you want to check the graph of this one for your understanding, I'll be showing you the graph. Let me write the function. It was x cube minus 4x square plus 4x divided by x square minus 1. क्या हमें ये दिख रहा है कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना? Can you see that, Ali and Alina? Yes, ma'am. ओके, तो टेबल वाला फॉर्मेट है, एक टेबल वाला फॉर्मेट है जिसमें कैलकुलेटर चाहिए, एक ग्राफ वाला फॉर्मेट है जिसमें ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पास नहीं होता है, और एक एल्जेब्रिक मेथड है कि सिंपलीफाई करो, पुट कर दो वैल्यू, अपने आप पता लग जाएगा कि y किस नंबर को अप्रोच कर रहा है. ओके, एंड वी डिड सो. इज इट क्लियर? क्या हम ये देख पा रहे हैं? यहाँ लिखा है जब x 2 है तो y अनडिफाइंड है. ग्राफ पे एक होल दिख रहा है, होल ग्राफ में. कैन यू सी द होल, अली एंड अलीना? 2 के ऊपर होल दिख रहा है, हॉलो सर्कल दिख रहा है, आया ना? हाँ मैम. यही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमने इनइक्वालिटी में सीखा था कि हॉलो सर्कल का मतलब है उस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, और यहाँ हॉलो सर्कल मतलब 2 पे डिफाइन ही नहीं है हमारा. ये जो ग्राफ है ये 2 पे डिफाइन ही नहीं है. ओके, और 2 के क्लोजर लेकिन डिफाइन है. y 0 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और हम देख पा रहे ग्राफ में कि हाँ y 0 को अप्रोच कर रहा है. ओके, इसे कहते हैं लिमिट. लिमिट का मतलब यही होता है कि जब x किस नंबर को अप्रोच कर रहा है तो y किस नंबर को अप्रोच कर रहा है. लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस. ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉब्लमैटिक पॉइंट होगा हम उसे फैक्टराइजेशन की हेल्प से रिमूव कर देंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we have to find the limit x tends to 2 and the function is x cube minus 2x square over x square minus 5x plus 6. Please do it, Ali and Alina.
Ma'am, it's 0 by 0 again. Again 0 by 0, and whenever we are getting 0 by 0, that means we need to do the simplification. Please try doing the simplification. Is it possible to simplify and then to put the value and then to get where exactly y is approaching? What are you getting, Ali and Alina? Numerator, it is crystal clear that we can take out x square commonly and x minus 2 will be removed. And what about the denominator? Splitting the middle term, 6 is there, so 3 2 times 6, will it work? Let's check it. Are you getting the same, Ali and Alina? Splitting the middle term is clear to both of you, right? Yes, ma'am. Okay, so we will be getting this. We can see the problematic expression we are able to eliminate from here by cancellation. Now we will be putting 2. If you will be putting 2 now, you will be getting 4 in the numerator and 2 minus 3. That means minus 1. That means minus 4 will be the answer. When x is approaching 2, then y is approaching minus 4. Getting it? Yes, ma'am. Okay, let's do few more questions. Suppose we are having limit x tends to 1. We are having x minus 2 or x square minus x. Okay, minus 1 by x cube minus 3x square plus 2x. Basically, you will be substituting and you will be checking that are we going to get 0 by 0. So 1 minus 2. Think about it. 1 minus 2 is minus 1 and again 1 minus 1 minus 1 0 we are going. Okay. Other one, if we will this is undefined. Something undefined we ended up getting. What about the other one? The other one will be getting 1 1 then 1 then minus 3 then plus 2. That means
Can you see both parts are coming as undefined? Just a second. Let me share it again. Yes, earlier I have given this question, this one, and it's still zero, but in denominator zero was coming. That means we have only one option to simplify it and then to put x value as a 1. Okay, so please do it now. Ali and Alina, please do it and tell me what are you getting. Do the simplification, whatever cancellation is possible, please do it and then let me know what are you getting. Yes, what are you getting, Ali and Alina? Let's do it. Ma'am, Are you 0 by doing? 0. I got 0 by 0 and now I'm doing simplifying. Yes, Ali, please do it. Do the Yes, ma'am. simplification.
to doing it Ali and Alina. What are you getting? From here, I'm getting x minus 2 and x minus 1. Is it so? Will be getting this. So the LCM will be x minus 1 and x minus 2. And the numerator will be, here we will be having x minus 1 we have taken, x we have taken, so x minus 2 whole square, and here minus we will be having x minus 1, x minus 2 is there, so we will be having only x minus 2. Okay, so we'll be getting a square minus 2ab plus b square minus x plus 1. So we are getting x square minus 5x plus 5. Doesn't sense. Now again, if we'll substitute x as a 1, still we are getting the denominator 0. Okay, just a second. Let me check. Am I missing anything? Yes, Ali and Alina, are you getting the same? Yes or no? Are you getting the same? Okay, let me check. Am I missing anything? Like, have I missed anything writing over here? Just a second. No, not missing anything. So maybe the calculation. Just a second. Just a moment. Yes, LCM we need to take. Here it will be x minus 2 square, and here it will be. Oh yeah, can you see here it will not be x minus 1? Can you see that? Ali and Alina, only 1 will be there. Here you are getting stuck. So हमारे पास क्या आ रहा है न्यूमरेटर में a square 2ab that means minus 4x plus b square that means plus 4 और यहाँ minus 1. ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. अब एक बार सोचते हैं कि क्या हम न्यूमरेटर में हमारे पास जो है उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से. सो 3 1 times 3, हाँ, yes or no? Alina, are you getting the Yes, ma'am. same? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि ये x minus 1 वाला टर्म डेनोमिनेटर से कैंसिल हो ही जाना चाहिए, कुछ भी करके कोई भी सिंप्लीफिकेशन जो भी पॉसिबल है. So numerator will be getting x minus 3, x minus 1 and yes. हम क्या चाहते थे? What we wanted? हम चाहते थे कि हमारे डेनोमिनेटर से ये x minus 1 रिमूव हो जाए ताकि हम लिमिट x टेंड्स टू 1 फाइंड कर सके. डेनोमिनेटर में 0 नहीं क्रिएट ना. Okay. So now we can find the value. Okay, 1 minus 3 is minus 2 and denominator will be minus 1. That means 2 is the answer, right? Ali and Alina. Yes, ma'am. Okay, तो इतना ह्यूज सिंप्लीफिकेशन करना होगा. यस, कैलकुलेशन करने से तो बेटर है सिंप्लीफिकेशन ही कर लिया, राइट? क्योंकि 0.9 0.99 0.999 ऐसे तो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर हमें 1 के क्लोजर देखना है तो वो भी एक मेथड है, टेबल बना. ओके,
but वो तो और भी difficult है. Better we'll be doing the simplification and then we can find, right? Ali and Alina. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so this is how we'll be finding it. If at the given x, if our function is not defined, which can be the case, then what we'll do, we will do the simplification. We will remove the problematic expression from our given rational expression, and then we will put the value that will directly give us when x is approaching 1, then y is approaching 2, which you will be able to see from the graph of the given function as well. Okay, so that's from here only the concept of limit arised. Mathematicians found that there are certain points where the given function will not be defined. Okay, then we can check how the y value, like how exactly